I have used simple stem stitch to do this design. It's very simple. You must take small stitches, then it will look very nice. I have taken 3 strands of thread and I have used green color. You may use any color of your choice. हम ये स्टेम स्टिच से ये डिज़ाइन करेंगे. हम ग्रीन कलर लिए हैं. आप कोई भी कलर ले सकते हैं आपका पसंद का. और हम 3 strands of thread लिए हैं. When you come to the end of this side, you must put the thread down. Then the corners will look very nice. अब जब end तक आएंगे, ये end तक आएंगे, then you must put the needle down. Needle ऐसे नीचे डालिए. Put the needle down and then again you pick it up from here. And turn the cloth and then start doing it from the other side. For doing this sleeve, I have chosen these 3 different colors: white, green, and a very dark shade of grey. You may take any colors that you wish. For the first line, I will do stem stitch, but with a little bit of difference. हम stem stitch ही करेंगे लेकिन थोड़ा अलग है. This is known as the Portuguese stem stitch. This particular stitch is known as the Portuguese stem stitch. You do ordinary stem stitch, then not on the cloth, through the stitch only. You take your needle once and you take it the second time. That's all. Then again take another stitch, stem stitch, take another stitch. Same, not through the cloth but through the stitch. Take your needle once and twice. That's all. Very simple. Again another stitch. एक सिंपल स्टेम स्टिच जैसे करते हैं वही कीजिए. उसके बाद ये नीडल को क्लॉथ के अंदर नहीं, सिर्फ स्टिच के अंदर 2 बार घुमा दीजिए. बस इसको पोर्टुगीज स्टेम स्टिच कहते हैं. And this looks nice. The border looks very prominent. अच्छा लगता है ये स्टिच करने से. बॉर्डर थोड़ा प्रोमिनेंट लगता है. That's all. I have used brown for the stem.
and I have used 3 strands of thread. You may use 2 also. हम ब्राउन कलर लिए हैं थ्रेड, हम 3 स्ट्रैंड्स लिए हैं, आप 2 स्ट्रैंड्स भी ले सकते हैं। Stem stitch is a very simple stitch, but it looks very good. You may do several designs using stem stitch only. In this design, I have used only stem stitch and no other stitches. हम ब्राउन कलर लिए हैं ये स्टेम करने के लिए। हम 3 स्ट्रैंड्स थ्रेड लिए हैं, आप 2 भी ले सकते हैं। स्टेम स्टिच इज़ अ वेरी सिंपल स्टिच। ये बहुत आसान स्टिच है, लेकिन बहुत सुंदर दिखता है। ये पूरा डिज़ाइन में हम सिर्फ स्टेम स्टिच यूज़ किए हैं और कोई भी स्टिच हम नहीं यूज़ किए हैं। और बहुत जल्दी भी हो जाता है, लेकिन जल्दी जल्दी में आप बड़ा बड़ा स्टिच नहीं लीजिएगा। You can do this stitch very fast, but you must remember that you must take small stitches. Always take small stitches. Only then your embroidery will look very nice. For doing this sleeve, I have taken this 4 shades of green. I have taken this because I am going to fill in this one and this one with stem stitch. हम 4 कलर लिए हैं थ्रेड का। हम ये 4 कलर लिए हैं थ्रेड का ये लीफ करने के लिए, और हम ये दोनों पोर्शन हम फिल इन करेंगे। फिल इन का मतलब एक लाइन के पास से और एक दूसरा लाइन हम स्टेम स्टिच करेंगे। 1 line and then another line of stem stitch just beside it. Now this is a shaded green thread I have taken so that it looks very nice. ये ग्रीन थ्रेड शेडेड है, शेडेड होने से बहुत अच्छा लगता है फिल इन के लिए। एक लाइन के लिए शेडेड उतना पता नहीं चलता है, लेकिन अगर आप फिल इन करेंगे तब बहुत अच्छा लगता है। Again, when you come to the end, just put the needle inside and then you turn the cloth and start from here once again. Start from the top once again. The next line should be just beside this. Absolutely beside this, the next line. And this is the way you are going to fill in this leaf. And always remember, take small stitches
एकदम फर्स्ट लाइन के पास से ही आप दूसरा लाइन शुरू कीजिए और छोटा छोटा स्टिच लीजिए। छोटा स्टिच नहीं लेने से आपका एम्ब्रॉयडरी सुंदर नहीं लगेगा। छोटा छोटा स्टिच आपको लेना है। ऐसे करके एंड करना है। एंड एवरी टाइम यू कम टू द एंड ऑफ द लाइन you must put the needle in, and turn the cloth. Put the needle in and turn the cloth and start from the other side. Every time you do that. When you are going to fill in with stem stitch, it might take some time, but after you have completed, it looks very nice. जब आप फिल इन करेंगे थोड़ा टाइम लगता है, ज़्यादा टाइम लगता है, लेकिन हो जाने के बाद बहुत सुंदर दिखता है। आफ्टर कंप्लीशन द डिज़ाइन विल लुक लाइक दिस। डिज़ाइन ख़त्म होने के बाद ये ऐसा लगेगा। होप ऑल ऑफ यू विल लाइक इट। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।